we start with Rishabh. So after the results that came in from the elections, there have been statements coming in from across the border. Khalil Rahman, the foreign minister of Bangladesh, have made two statements. A, if there is a pushback after the new government in West Bengal, there will be appropriate action taken. This is his word. And the second, on the Teesta issue, he is going to speak to China as well. What will be your reaction to that? See, we have seen comments of this nature being made in the last several days. These comments must be seen in the context of the core issue of repatriation of illegal Bangladeshis from India. This obviously requires cooperation from Bangladesh. Over 2,860 cases of nationality verification are pending with Bangladesh, and some of it, or several of it, a lot of it, for over 5 years. Our policy, as you very well understand, is that any foreign national who is illegal in the country, he or she must be repatriated as per our laws, procedures, and established bilateral mechanisms and arrangements. We expect that Bangladesh will expedite nationality verification so that repatriation of illegal immigrants can take place in a smooth manner. इन सब टिप्पणियों को आपको एक बैकग्राउंड के रूप में और उसके बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो है प्रत्यावर्तन का, मतलब कि रिपैट्रिएशन का, उन लोगों का जो अवैध लोग हमारे देश में रह रहे हैं, बांग्लादेश के। जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है, और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। कई एक सारे मामलों में ये 5 साल से ज़्यादा लंबित हैं। हमारा, जैसे कि जानते हैं कि हमारा ये नीति है, ये पॉलिसी है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा जब उनकी नेशनलिटी वेरिफिकेशन, उनका राष्ट्रीयता का सत्यापन हो जाता है। और हमारा ये अपेक्षा है बांग्लादेश से और उनके सरकार से कि जो नेशनलिटी वेरिफिकेशन यानी राष्ट्रीयता सत्यापन का जो हमने मांग उनको भेजा है उसको वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे ताकि जो भी अवैध रूप से बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं उनका रिपैट्रिएशन हो सके एक बड़े सुचारू रूप से। The other question, Rishabh, you had was on Teesta. Look, between India and Bangladesh, we have 54 rivers which the two countries share. We have structured bilateral mechanisms to discuss all water-related issues, and these bilateral mechanisms, they continue to meet at regular intervals. Siddhant, your question on Operation Sindoor. Today, we are marking the first anniversary of Operation Sindoor. The entire world saw the Pahalgam terrorist attack for what it was. We gave a befitting reply to Pakistan for its sponsorship of cross-border terrorism. The world knows that cross-border terrorism has long been used by Pakistan as an instrument of state policy. We in India have every right to defend ourselves against terrorism. We will continue to work to strengthen the global fight against terrorism.